इस लाइव स्ट्रीम पर। चैनल का नाम है आर यू हियर फॉर द क्रिकेट, ब्रॉट यू बाय डाफा न्यूज। मैं हूं हमेशा की तरह आपका दोस्त और होस्ट जीमी ऑल्टर। क्रिकेट का सिलसिला शुरू करेंगे दोस्तों आप, लेकिन प्लीज इससे पहले लाइक बटन दबाइए। आप लोग को तो ड्रिल पता है, जितना भी आप लोग लाइक बटन दबाएंगे उतने ही इस वीडियो की रीच के बढ़ने के चांसेस हैं दोस्तों। आई होप यू कैन हियर मी। मैंने वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया है। द लाइव स्ट्रीम एज यू ऑल नो दोस्तों, खासकर हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, द लाइव स्ट्रीम इज कॉल्ड कॉफी एंड क्रिकेट विथ जेमी, मंडे टू फ्राइडे एंड समटाइम अगर वीकेंड स्केड्यूल ने इजाजत दिया तो मैं आपके सामने लाइव आता हूं। बट टुडेज डिस्कशन इज, वेल यस, हम थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं आज शाम को होने वाले टेस्ट मैच के बारे में, लेकिन ऑलरेडी आपके लिए आज एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं उस पे, एज वेल एज कल पूरा आधे घंटे का लाइव स्ट्रीम किया था। तो आई सर आज एक ऐसे चीज के बारे में बात करते हैं जिसे लेकर मेरे व्यूज तो काफी स्ट्रांग है। स्पीकिंग ऑफ स्ट्रांग, आई हैव सिप माय स्ट्रांग कॉफी। हम्म। क्या बात है, सुबह का तीसरा कॉफी कप आप लोग का साथ और क्रिकेट की बात है। वेल दोस्तों, I want to talk about an article that I read this morning, three articles in fact, which is in related to one day cricket. नमस्ते विनोद काका, स्वागत है आपका पाजी। वन डे क्रिकेट, अब दोस्तों वन डे क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है, अगर आप आ चुके हैं मेरी स्ट्रीम्स पे या आप मुझे और कुछ चैनल्स पे देख चुके हैं बात करते हुए, तो आई थिंक वन डे क्रिकेट इज द मोस्ट बोरिंग फॉर्मेट, एंड अलोंग विद बीइंग द मोस्ट बोरिंग फॉर्मेट, वन डे क्रिकेट खतरे में है। क्यों है खतरे में? बिकॉज ऑफ कोर्स T20 लीग्स, इतने सारे T20 लीग्स जहां पे आपको कम समय में कम मेहनत में आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसी साल 2023 के अंदर 3 T20 फ्रेंचाइजेस शुरू हो चुके हैं। दो हम देख चुके हैं, एक दुबई में, एक साउथ अफ्रीका में, और तीसरा अमेरिका के जाने माने शहरों के अंदर इस साल शुरू होगा। और हम इसके चलते देख चुके हैं कि कितने इंग्लैंड प्लेयर्स, न्यूजीलैंड प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, सम कैरेबियन प्लेयर्स, वो उस मेजर लीग क्रिकेट में खेलने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को दांव पे लगा चुके हैं। जेसन रॉय इज द मोस्ट रिसेंट एग्जांपल, और एक आर्टिकल आया था 2 दिन पहले कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मेजर लीग क्रिकेट अपने आप से लड़ना नहीं चाहते हैं। तो there's that, there's so many leagues, there's this significance of अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट। there's also the fact कि वन डे क्रिकेट, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि पता नहीं कब अगला होगा, होगा भी नहीं होगा, वी डोंट नो, और फिर हर 4 साल का वर्ल्ड कप, इनके बीच जो मीनिंगलेस 3 5 कभी कभी 7, शुक्र है 7 तो उन्होंने काफी साल पहले बंद कर दिया, और ये 3 5 7 मैच के बायलैटरल श्रृंखलास, ये इतने बोरिंग है दोस्तों। एक तो क्वालिटी गिर चुका है मोटा मोटा, अगर हम देख चुके हैं टेस्ट और T20 के हिसाब से, ऊपर से अनलाइक अमेरिकन स्पोर्ट, एंड दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट वेरी वेरी ओपनली एंड वेरी स्ट्रांगली अबाउट, यू सी, चाहे मेजर लीग बेसबॉल हो या NBA हो, अगर आपके फाइनल्स बेस्ट ऑफ 5 मैचेस के हैं, तो अगर एक टीम 3-0 जीत जाती है या फिर ऐसे मार्जिन से जहां दूसरे टीम का वापस आना नामुमकिन है, तो वो सीरीज को, वो चैंपियनशिप को वहीं खत्म करते हैं। वो जो 2 3 डेड रबर्स, इफ आई कैन यूज द क्रिकेटर, वो 2 डेड रबर्स नहीं खेलते। क्रिकेट में ऐसा नहीं है, बिकॉज इकोसिस्टम कुछ अलग है, पैसे इनको ज्यादा कमाने हैं। अगर आप एक 5 मैच की श्रृंखला या 7 मैच का श्रृंखला खेल चुके हो, और अगर चलिए 5 से शुरू करते हैं, अगर उन 5 मैचेस में एक टीम ने 3-0 का लीड ले लिया, तो अगले 2 मैचेस हम क्यों खेलते हैं? सीरीज तो जीत चुके हैं वो लोग। सिर्फ पर्सनल स्टैट्स और स्टैंड में लोग को फिट करने के लिए और एड रेवेन्यू के लिए वो दोनों बाकी के डेड रबर्स वो खेल जाते हैं, और मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत ही बोरिंग है। इसीलिए मैं दोबारा ये कहूंगा, जो पिछले 3 4 साल से कह रहा हूं, वनडे क्रिकेट की हालत देखकर, 22 ट्राई सीरीज, क्वाड्रेंगुलर्स, ऐसे टूर्नामेंट्स वापस लाइए जहां पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हो। अब कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ऑफ कोर्स एक ODI सुपर लीग हुआ करता था, इस साल ICC ने खत्म कर दिया। वो सुपर लीग का मकसद ये था कि टीम्स को एक वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का रास्ता दिखाएं एंड मेक इट टफ। वो नहीं चला कुछ खास। तो अभी we're seeing the one day format, बहुत बहुत लोग कह चुके हैं कि इसमें मजा नहीं आ रहा है। सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, रवि शास्त्री, बहुत 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 नाम जो है, उन्होंने कहा था या तो कुछ बदलाव लाओ या तो ये फॉर्मेट मर जाएगा। बेन स्टोक्स 31 की उम्र में, इन्होंने पिछले साल कहा था कि मैं वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। ये वही बेन स्टोक्स है जिन्होंने ऑलमोस्ट अपने दम पर इंग्लैंड को पहली बार वनडे वर्ल्ड कप दिलाया 2019 में, और उनको लगता है कि मेरे पास इतना मोटिवेशन नहीं है 2023 में
इंडिया जाकर उसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को डिफेंड करने की, सो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप आई वांट टू हाईलाइट द मीटिंग, द एमसीसी वर्ल्ड कमिटी का कल एक बैठक हुआ था जहां पे कई कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की। एंड आई विल गेट योर कमेंट्स, आप लोग बस मुझे 2-3 मिनट दीजिए, मैं ये आपको ये आर्टिकल पढ़वाता हूं। एमसीसी, आई गॉट द आर्टिकल हियर, इन्होंने कुछ चीजें कहा था। उन्होंने कहा था कि टेस्ट क्रिकेट को सेफ रखने, टेस्ट क्रिकेट का भविष्य, टेस्ट क्रिकेट को सिक्योर रखने के लिए आप थोड़ी एक्स्ट्रा फंडिंग कराएं, T20 लीग्स को आप देखिए। और उन्होंने कहा था कि जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाहर इन तीनों देशों के अलावा जो टेस्ट क्रिकेट का जो हाल है उस पर काम करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बहुत देश, उनके पास पैसे नहीं है कि वो टेस्ट टीम्स को लाएं और टेस्ट टीम्स को एक 3-4-5 मैच की श्रृंखला दे दें। So these were the things discussed, but what caught my attention was this MCC's committee's views on one day cricket. अब देखिए, एमसीसी ऐसा नहीं है कि ये कमेटी जो कहेगी वो होगा, या आईसीसी के पास कुछ दबाव होगा इसको इसको फॉलो अप करने के लिए, लेकिन ये काफी एक इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट रहा। इनका कहना है कि क्योंकि इतने डोमेस्टिक T20 फ्रेंचाइजेस बढ़ रहे हैं तो कैलेंडर क्रैम्ड हो रहा है, प्लेयर्स थक चुके हैं, प्लेयर्स अब चुन रहे हैं T20 लीग खेलने में और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बीच। तो अब now I'm coming to the crux of the matter. The most important line is MCC क्रिकेट कमेटी ने कहा था कि सिर्फ 2027 यानी कि 2027 नेक्स्ट वनडे वर्ल्ड कप के बाद वनडेज को बंद करो, तभी खेलो, सिर्फ अगले वर्ल्ड कप के 12 महीने पहले। यानी कि ये कह रहे हैं कि दो विश्व वर्ल्ड कप के बीच जो 4 साल का गैप है, उन 4 में से 3 आप मेंस वनडे क्रिकेट मत खेलो, बायलैटरल क्रिकेट मत खेलो। इससे क्या है, थोड़ी बहुत जगह, थोड़ी बहुत ब्रीदिंग रूम बन जाएगा कैलेंडर में, और बायलैटरल वनडेज की जो ये थकेली बोरिंग हाल है उसको आप हटा दोगे। अब ये बहुत ही रेडिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, एंड आई थिंक वी आर अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैट हैपनिंग, पॉइंट ये है कि इस कमेटी के चेयरमैन माइक गैटिंग है, और बता दो आपको इसमें ऑल्सो ओवेन मॉर्गन है, और भी इनमें कुछ प्लेयर्स हैं। इनफैक्ट हु इज देयर अगेन, लेट मी जस्ट गेट इट आउट अगेन। इसमें है, हाँ, हेदर नाइट, Owen Morgan and Claire Connor, as well as Mike Gatting, all Brits, but that's just a side thing because it's MCC. ये कह रहे हैं कि 4 साल के बीच तीन साल में से वनडे मत खेलो, सिर्फ वनडे खेलो अगले वर्ल्ड कप के 12 महीने पहले। Is that going to work for the health of one day cricket? I'm not sure. लेकिन क्योंकि इतने सारे करंट और फॉर्मर दिग्गज खिलाड़ी, मीडिया एनालिस्ट, फॉर्मर प्लेयर्स टर्न मीडिया पंडित्स, और अब एमसीसी क्रिकेट कमेटी कह रही है कि वनडे क्रिकेट खतरे में है, इसको कम कर दो। इट जस्ट लीड्स मी टू से समथिंग अगेन, जो मैं दोबारा कहूंगा इस प्लेटफॉर्म पर। इस साल 2.5 महीने के बाद जो वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इट कुड बी द लास्ट इंपॉर्टेंट वनडे वर्ल्ड कप आप और मैं कभी भी अपनी जिंदगी में देखेंगे। 4 साल के बाद वनडे क्रिकेट का जो हाल है वो हम उस पर कुछ सटीक एनालिसिस, सटीक ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते। और 2027 के बाद जब ये लोग कह रहे हैं कि वनडेज बंद कर दो मोटा मोटा, आई थिंक दिस ईयर्स वनडे वर्ल्ड कप विल बी द लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप, इंपॉर्टेंट फॉर अ जनरेशन ऑफ फैंस हु ग्रू अप watching one day cricket, important for a generation of current World Cup players जिनकी क्रिकेटिंग यात्रा शुरू हुई होगी वनडे वर्ल्ड कप्स देखकर जब वो बच्चे थे, अपने पिताजी, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ। अगले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा नहीं रहेंगे, जसप्रीत बुमराह नहीं रहेंगे, हो सके विराट कोहली नहीं रहेंगे, तो सारे टीम में से जो भी सीनियर खिलाड़ी हैं वो 4 साल बाद वनडे क्रिकेट में मोस्ट लाइकली नहीं होंगे, तो एक लिहाज से वो भी देखना है। सो इट्स अ बिग स्टेटमेंट एमसीसी क्रिकेट कमेटी द्वारा कि 4 साल के बाद वनडे क्रिकेट बंद कर दो। और इसी बात पर मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूं, आपके सवाल। Crickmania saying, as an ODI fan watching cricket since 90s, I feel bad for the format. ODI is the only format where you ability to bat longer and faster are tested together. Yes, but Crickmania, I want to tell you something. कि 1995 was the year, 94-95 was that period where I became a proper cricket diwana. मतलब eat cricket, sleep cricket, whatever. I used to make scorecards, and along with my imaginary scorecards, मैं उन scorecards के साथ खुद का मैच रिपोर्ट भी लिख रहा था। 15 साल की उम्र में क्लास के बैक बेंच पे बैठ के मैं स्कोर कार्ड बनाता था, टेस्ट मैच का, वनडे का, सारे टीमों का। और फिर उन स्कोर कार्ड्स के साथ, मैं इतना वेला था क्लास में, मेरे मार्क्स फिर भी ठीक थे, मैं उन इमेजिनरी स्कोर कार्ड्स के साथ ख्याली पुलाव पक्का के
I would make up the reports. In that time, 1996 वर्ल्ड कप, जो कि पहला वर्ल्ड कप था जो मैंने पहली गेंद और आखिरी गेंद तक देखा, उस समय 15 साल की उम्र में 15 ओवर के बाद और आखिरी 10 ओवर के बाद मैं उस गेम को छोड़ के जाता था जब इंडिया नहीं खेली थी। तो अगर मैं 1996 में वनडे क्रिकेट से बोर होता था, तो अब सोचो कि आज मैं इस मरते हुए फॉर्मेट को कैसे देखता हूं। अर्पित सिंह, नमस्ते सर, हैविंग कॉफी राइट नाउ टू अकम्पनी यू। थैंक यू अर्पित, शुक्रिया दोस्त। इस बात पर एक और सिप। आकाश कह रहे रिसेंटली इंडिया वर्सेस ओडिया वाज वेरी बोरिंग, बायलैटरल्स आर बोरिंग। हार्दिक जुड़े हैं, वो कह रहे हैं मुझे लगता है अगर ओडीआई में सांस फूकनी है तो ट्राई सीरीज और नॉकआउट कप दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं 4 साल से कह रहा हूं भाई। क्रिक मेनिया अग्री जे माई बायलैटरल शुड बी रिमूव्ड टू कीप ओडीआई इंटरेस्टिंग, ओनली मल्टी-नेशनल टूर्नामेंट्स कैन हेल्प। बिल्कुल प्रणव, देयर आर रूमर्स दैट स्टोक्स माइट कम आउट ऑफ रिटायरमेंट फॉर दिस वर्ल्ड कप। Pranav, given the fact that we're less than 3 months and Ben Stokes is really struggling, his fitness, there's issues with his fitness, his knees, his back. I don't think it's possible. I think, in fact, post Ashes, we might even see him retire from Test cricket. So I don't know, my friend Pranav. I don't know. सचिन से 25 ओवर्स की 4 इनिंग्स कर सकते हैं। हाँ, ये मैंने सुना है, बट ये थोड़ा मुझे ज्यादा लगता है, थोड़ा गिमिक लगता है। हेलो निहार, हेलो दिवांग, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग दोस्तों। बिल्कुल सही है, आपने सभी को स्वागत किया है। ध्रुव कह रहे हैं if what they're suggesting about ODI does happen, then I think this will be filled with IPL and it may become like the English Premier League. That's a good point, Dhruv. मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, half jokingly, we're not too far away from a calendar where there'll be a separate window for international cricket because T20 leagues are going to dominate like no one's business. ये major league cricket जो आने वाला है, ये potential game changer होने वाला है। Yes, Ashutosh, already 3 match ODI series is played. You know, Ashutosh, three. I remember there was not too long ago कि South Africa, West Indies, England, Australia, 9, 10 years ago, they used to play 7 match series. 7 match bilateral series. भाई साहब, golf और F1 के बाद और मैंने इतना बोरिंग कोई स्पोर्ट नहीं देखा कि 7 मैच का bilateral series. I think if you're going to do bilaterals, do not go more than three. Three is more than enough. But even again, yeah, three में, if there's no context, if there's no, what is it? You're just playing for the rankings. मजा नहीं आता यार. That's why I'm saying try series, quadrangular, bring something. Watching two teams play 3 match series is in one days is very, very, very boring, especially when bat dominates. Manish कह रहे भैया, we should move on. ODIs aren't practical for current lifestyle. Current lifestyle की तो बात नहीं है. But yeah, definitely bilaterals. Bilaterals have to go. Kshitij More should have made the one-day game interesting instead of phasing it out. Yep, I agree with you. I agree with you. I remember being 6 years old and Chris Cairns made me cry in the 2000 IC knockout final. Some great matches. Aditya, you're spot on. I'm telling you, this is why I'm saying Virat Kohli, Rohit Sharma, all these players, pick up any major player from any of this year's World Cup squad. मैं दावे से कह सकता हूं कि इनकी जो सबसे पहली यादें हैं वो वनडे क्रिकेट के होंगे. द कलर, द वाइब्रेंसी, सिटिंग विद देयर फादर्स, देयर अंकल्स, जो भी है. प्लेयर्स अक्सर इस खेल पे आते हैं जब वो कुछ यादगार मैच देखते हैं, जैसे कि आपने कहा. तो विराट कोहली would have had memories of watching Sachin bat in blue colors. Same with Rohit. Same for Joe Root. Whatever it is, all these players, the Aussies, they would have had memories, visual, very stirring memories of one-day World Cups. Which is why I think one-day format, especially World Cups, will always last longer than T20s and perhaps Test cricket. But that doesn't mean that you persist with bilaterals. You need to make relevance. I hope the Champions Trophy comes back every 2 years. I hope the World Cup stays relevant. But 4 years from now, क्या हाल होगा इस one-day format का, मुझे नहीं पता. Jaya Krishnan is back. I think one day can survive through try series. बिल्कुल बिल्कुल. We've had this talk. Absolutely. विनोद काका, मैं आपका पॉइंट समझ नहीं. आपका मतलब है कि 2023 वर्ल्ड कप. हाँ विनोद काका, मैं ये कह रहा हूं कि 2027 का वर्ल्ड कप होने वाला है. खबर आ रही है कि एमसीसी वाले कह रहे हैं, और हो सके कि इनकी रिकमेंडेशंस कोई सुन के इनको इंप्लीमेंट करे. वो कह रहे हैं कि 2027 के बाद ओडीआईस मत खेलो. तो जब ये कह रहे हो सके कि 8 साल बाद विश्व वनडे वर्ल्ड कप हो ही नहीं. मेरा पॉइंट ये विनोद काका कि ये जो वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट की हेल्थ खराब स्थिति देखकर मुझे नहीं पता, या मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता हूं कि 2027 की वर्ल्ड कप जो है वो किस फॉर्मेट में खेला जाएगा, कौन से प्लेयर्स होंगे. ऑलरेडी वनडे फॉर्मेट की स्टैंडर्ड इतनी गिर चुकी है. आप सोचिए कि जब स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जो रूट, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स,
केन विलियमसन, अब कोई भी टीम के टॉप 5 प्लेयर्स ले लो, 4 साल बाद ये प्लेयर्स नहीं होंगे। तो ऑलरेडी वनडे का स्टैंडर्ड 2027 में इतना गिर चुका होगा, जब ये बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं रहेंगे, जब शायद 8 साल बाद या 5 साल बाद वनडे नहीं रहेगा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि इस साल का जो वनडे वर्ल्ड कप है, वो लास्ट इंपॉर्टेंट वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है। इसलिए चाहता हूं कि आप सभी थोड़ा समय निकालकर अपने कामों से, टीवी पे एटलीस्ट, अगर आप ग्राउंड तक नहीं जा पाएंगे, इस आखिरी वनडे वर्ल्ड कप को थोड़ा प्यार से देखिए, एंजॉय करिए। बिकॉज इन 2027 वी डोंट नो हाउ वनडेज आर गोइंग टू बी। विल प्लेयर्स वांट टू प्ले इट? विल प्लेयर्स बी अराउंड? हो सके 4 साल बाद प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट और सिर्फ टी20 खेल रहे होंगे। इसीलिए मेरा यह मानना है कि इस साल का जो वनडे वर्ल्ड कप है, 3 महीने बाद, वो आखिरी इंपॉर्टेंट वनडे वर्ल्ड कप हो सकता है हम सबकी जिंदगी में। Devang is saying, do you think it'll be a push for franchise cricket? Franchise, absolutely, franchise, nothing else. सुबोध जुड़े हैं, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। सुबोध ने कहा, अरे केएल राहुल से आगे बढ़ो यार। सुरेश वातवानी जुड़े। सुरेश भाई, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं भाई? सुनकर बहुत दुख हुआ, ओडीआई मैच बंद हो रहे हैं 2027 के बाद, बचपन देख रहे हैं ओडीआई फीलिंग। बिल्कुल दुख होता है सुरेश भाई, ऐसा नहीं है कि बंद हो रहे हैं, लेकिन एमसीसी क्रिकेट कमेटी ने ये बयान दिया है कि हमें लगता है कि टी20 क्रिकेट के लिए और भी जगह बनाने के लिए, टेस्ट क्रिकेट की हेल्थ और सेहत बरकरार रखने के लिए बायलैटरल वनडेज को कम करना चाहिए। और मैं इस बात से सहमत हूं। रही बात वर्ल्ड कप्स की, आई डोंट नो कि 8-10 साल बाद वर्ल्ड कप्स रहेंगे, आई डोंट नो, लेकिन जरूर दुख होता है। आप दुलीप ट्रॉफी फाइनल देख रहे हो? नहीं भैया, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। उससे पहले देख रहा था, उसके बाद देखूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूं। वरुण कुमार is saying franchise cricket is the future whether we like it or not. बिल्कुल, it's the present, forget the future, it's the present. A lot of franchises are going to come up. इसी साल हमने 3 अलग अलग बहुत पैसे वाले franchises देखे, और भी आएंगे, which is why I feel that scenario is not too far, जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए आईसीसी को एक अलग विंडो बनाना पड़ेगा। That's how far the game has changed. Should ICC make format like WTC for ODIs? So they have the ODI Super League, which they scrapped after 4 years. So they've tried, but it didn't work out. ODI has been boring because of play style. Exactly, 300 is chaseable, 350 is chaseable, too many flat tracks, and I suppose more than that, not enough quality teams. Associate nations like Zimbabwe, Netherlands, should get compulsory additional tries without full members. I agree, Kshitij, I agree, but it's not going to happen. हार्दिक कह रहे, जय भाई, आपको नहीं लगता अगर ओडीआई बंद हो गया और जिस हिसाब से टी20 लीग आ रहे हैं, एक टाइम पर आकर क्रिकेट बोरिंग हो जाएगा? ऑलरेडी बोरिंग हो चुका है दोस्त, ऑलरेडी बोरिंग हो चुका है। मैं आईपीएल को छोड़ के कोई भी टी20 लीग देखता नहीं हूं यार। बाकी लीग्स सब सेम लगते हैं, जर्सी सेम लगते हैं, फैन सेम लगते हैं, और वनडे क्रिकेट तो भाई मैं तो देखता नहीं हूं। 2019 का वर्ल्ड कप मैं कवर करने गया था इंग्लैंड में, पहला मैच इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, बेहतरीन मैच था। 4 विकेट लिए थे किसी ने, और बेन स्टोक्स ने कमाल का कैच। मैं ओवल मैदान पर बैठकर मैं उस मैच के बीच मीडिया बॉक्स में मेरी आंखें लग गई। तो आई हैव नो डाउट कि ये फॉर्मेट ऑलरेडी बोरिंग हो चुका है। Is big names going into retirement a decline for ODIs? Absolutely, that's also a point. When the big names go away and the new players are not doing as well as fans expect them to, this is also a factor. Bilkul. Harsha is saying test isn't even test anymore. It's like ODI with 2 innings. There are certain matches, but if you're talking about 3-day matches, I'm all for them. Arpit keh rahe hain, somewhere football derby culture can help it making interesting. Ashes is, I mean, look at how many people are watching the Ashes right now. What a fantastic Ashes we're watching. India Pakistan to bhai 10 saal se hua nahi. MICSK India Oz. See, for this football derby culture to come into existence, Arpit, usko time lagta hai. You were born into it. If I'm born into a family which say supports, I don't know, the Boston Red Sox or Man United or the Indian team or any club, La Liga club जो भी है, उस परंपरा के चलते पिताजी, दादाजी, नानाजी, जो भी फैमिली के सदस्य हैं, उनसे कहानियां सुनकर, उनसे किस्से सुनकर, उनके साथ समय बिताकर तभी एक्सपोर्टिंग कल्चर बन जाता है। सो आई एम श्योर, लाइक आई ग्रो अप हियरिंग स्टोरीज अबाउट इंडिया पाकिस्तान, अबाउट द एशेज, अबाउट दिल्ली वर्सेस बॉम्बे इन रणजी। तो इस लिहाज से, इस सिस्टम में पैदा होकर मैं क्रिकेट का फैन बना। सो आई गेट योर पॉइंट, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी पर्सनली is from a young age, are you, me, are we all being drawn to sport because of some link, some rich heritage? I don't know about that. शेख अय्यर का प्रॉब्लम है सर,
भाई अयर के बारे में बात नहीं कर रहे हम सुबोध, हम बात कर रहे हैं वनडे क्रिकेट के बारे में. What's the future of Champions Trophy? Well, the next one is supposed to be in Pakistan. आप मैं हम सब जानते हैं कि वो नहीं होगा. It'll happen, but it'll be pulled into some other country. It won't happen in Pakistan. PCB can cry all they want to cry about it. I don't think T20 internationals replacing ODI would be fruitful. I agree. At that point, I'd be happy watching leagues around the world. Leagues are the future. Antarashtriya T20 is not going to go too far. Leagues are going. Why are we taking an Anglican view of ODI cricket, Sudhir? It's still very popular in Asia. Is it though? I don't see houseful stands in most countries. I've covered cricket in India. There are still when the big team comes, you get them, but इतने इतने matches हैं कि यार हमारे हमारे 22-25 हजार के stadiums वो भी full नहीं हो रहे. I think the audience has spoken. New Zealand were here this year. We didn't get full houses. We saw Shubman Gill get 200. The stadium was only two-third fill. So I don't know, Ashutosh. I think one day bilateral cricket is being viewed the same. You might even get more. In fact, probably more people watch ODIs in England and Australia in the stands I'm talking about than in India. Sri Lanka, barring the Premadasa, इनके fans होते हैं, but you don't get houseful there. So I'm answering your question based on the fact कि what am I seeing on TV and what am I seeing when I'm at the ground? And I'm not seeing enough houseful, sold out stadiums in Asia when teams are playing. So that leads me to believe कि even Asia के अंदर बहुत लोग इस बात से शायद से agreement में है कि one days are not boring. The same thing, T20 sold out. Test cricket, if good teams come, you're seeing houseful. But one day, I'm just not seeing that kind of enthusiasm, in India. So, इंडिया वाले आपस में झगड़ते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट मेन से में ड्यू टू डेथ की हो जाएगी. होपफुली नॉट. सूदिंग मेडिटेशन सेइंग डोंट लाइक क्रिकेट टू सेव ओडीआई दायरे हटाओ सिंगल बॉल बॉलर कंड्यूस कंप्लीट फेसलिफ्ट होगा नहीं भाई. What's your opinion about Gill at 3? I've been saying it for years. He has to bat, and he is batting. Rohit confirmed it. Hi, team. Bring back red ball to ODI cricket. भाई विक्रम कुमार ये तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है. हो नहीं पाएगा भाई. पूरा आपको इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा. होगा नहीं भाई. But good idea. Craig Mania पूछ रहे हैं, do you think if we get record viewership on ODI World Cup this year, MCC will be forced to rethink on ODI format? Major, yes, it's true. But मेरा ये मानना है कि T20 लीग जो आ रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा थोड़ा सेक्रेड रखने के लिए बायलैटरल्स को थोड़ा कम करना चाहिए. तो मे बी अगर व्यूज आए, आई थिंक पीपल विल वॉच बिकॉज विराट का आखिरी वर्ल्ड कप है, रोहित का आखिरी वर्ल्ड कप है, तो लोग आएंगे देखने. बट आई डोंट नो कि बायलैटरल क्रिकेट का हेल्थ क्या रहेगा 4 साल बाद. Varun Kumar saying the way BCCI treats its fans, it's a waste to spend the entire day watching. I agree. Look, it's not just ODIs. Literally the only time I go to a ground to watch any kind of cricket in India is if I'm paid to cover it. मैं अपने पैसे कभी दूंगा नहीं इस क्रिकेट को इंडिया के अंदर देखने के लिए. आपकी एक्सपीरियंस घर से निकलते ही मुसीबत वाली है. Very few centers. The grounds are centrally located. I can think of Bangalore. I can think of Mumbai, Wankhede, Brabourne. I stay in Noida. To get to the Kotla is a mess. To find parking at the Kotla is a mess. To be frisked 17 times while going to the Kotla, it's a mess. I've covered cricket in so many grounds. Even journalist के तौर पे हमसे बोला जाता है कि ये पेन रखो, ये नोटबुक रखो. BCCI has not made it a simple, easy process like in the West to enter an Indian cricket stadium and then to sit there. अगर 20,000 लोग हैं तो you don't have enough adequate washing rooms. They're in bad conditions. You don't have enough fountain Pepsi stands. You don't have enough snack stands. It's a total and utter disaster experience watching Indian cricket in India. So yes, the BCCI has to be blamed. But again, the BCCI has never really valued the fans or the money coming in from the turnstiles. BCCI makes money well before the first ball is bowled, right? तो जब आप फैंस को इस लायक नहीं समझते कि उनको अच्छी सुविधा दें, अच्छी बैठने को जगह दें, छांव दें, तो नहीं होगा. If you guys still pay to watch cricket, I respect you. I have a lot of love for you. You could not get me to go to any Indian cricket stadium on my own money. I've done it too many times since 1987. It's most times I've had a terrible experience. So मैं तो जाता नहीं हूँ. New India jersey is awful. Oh, I will second that opinion. Very awful. Completely agree with you, says Arpit. Some onus will be on us to develop this Derby culture for next generation. बिल्कुल.
आप मैं हम सभी को करना पड़ेगा। आकाश कह रहे हैं आउटसाइड साउथ एशिया ओडीआई क्रिकेट इज ऑलरेडी डेड। I still see packed houses when England play ODIs. I still see good crowds when Australia play ODIs. But overall, whether it be Asia, the Caribbean, South Africa, wherever Europe, North America, South America, the one-day cricket is not pulling as many crowds as T20Is. It's a fact. Yes, the BBL will draw fans, but I still have seen on TV. I've seen more people sit in England and Australia that I've seen in Sri Lanka, Pakistan, sometimes India. So it's really mixed signals. Jaya Krishnan is saying, I think the problem is now all teams are playing according to World Cup. Like 2023 teams are playing more ODIs. But this is the case. In a T20I World Cup year, teams play more T20s. In a one-day World Cup year, teams play more ODIs. The problem is, Jay Krishnan, I think the standard of one-day cricket is so poor. I think because the World Cup's in India, where India have a formidable record. I'll say it again, only one team since 2015 has managed to come here and win a one-day series. That's Australia. Australia have a very good record in India, but barring them and maybe on a certain day in certain conditions, I just don't see enough quality teams being able to push India or Australia. So it just leads me to say again, to underline emphatically कि वनडे क्रिकेट का स्टैंडर्ड टेस्ट के मुकाबले में और अंतर्राष्ट्रीय T20 के मुकाबले में बहुत कमजोर है. Maybe after 50 crore being given to each stadium, condition might improve. Yes, Aditya, I hope. But are they going to put ramps for wheelchairs for disabled people? Are they going to make parking better? Are they going to improve the bathrooms? I just don't have the faith. I don't. A 32 team cricket World Cup like football sapna hi. By 30 team क्षितिज 32 टीम का वर्ल्ड कप ना 6 महीने चलेगा. हम यानी कि हम क्रिकेट वाले फीफा वर्ल्ड कप में कितने टीम्स होते हैं? अभी खबर आ रही है कि अगले वर्ल्ड कप में क्या 40 समथिंग होंगे. Still that World Cup is done in 3 weeks. In cricket, our bloody one-day World Cup with 10 teams goes on for almost 2 months. How is this even sustainable? और आप कह रहे हो 32 टीम्स, this will be a 6 month World Cup, यार. Keep the World Cup to maximum 14 teams because I believe कि associate teams का होना बहुत बहुत जरूरी है. You cannot have a World Cup qualifier for 6 weeks जहां से सिर्फ 2 टीमें आती हैं. वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में से 4 टीमें डालिए. मेक इट 14 टीम्स because the associate teams can only get better if they get the chance to play with more top level teams. लेकिन ऐसा क्यों होता है? वनडे वर्ल्ड कप में केवल 10 टीमें क्यों होती हैं? 12 टीमें क्यों होती है? Because the host broadcaster यानी कि स्टार क्रिकेट they do not want to run the risk of having Netherlands playing Scotland, having Oman playing Nepal at the MCG, at Oval, at Leeds, and there being 500 people. It's a blot. It looks bad visually. It's not good optics. World Cup participation is largely decided by the host broadcaster, not the governing body that runs cricket. It's a fact. It's shocking, but we have to accept it. A 32 team World Cup, भाई साहब 6-8 महीने लग जाएंगे हमारे बंदों को इसको चलाने में. Flat pitches don't contribute to ODI, but then casuals pull their hair when teams haven't even. बिल्कुल. I'm saying a 275, 280 on a good pitch. See, cricket is most fun or most entertaining based on the pitch. That depends on how you view it. Look at baseball. Baseball is entertaining. It's fun. There's wickets falling. There's runs being scored at 4.5. But baseball is based purely on the condition of the pitch, right? Same in T20. Every now and then, once in a blue moon, a team gets bowled out for 80 in a T20 World Cup. Oh, look at hey, kya hua, kya hua, kya hua? Because in that random stray match, there was seam, there was swing. Every now and then, once in a while, you see a one-day team make 220 and defend it. That's on a gripping turning. So cricket is so based on the conditions. Now, that's an individual view, whether you want fast pace, whether you want slow pace, whether you want middling scores, that's individual view. But the more you make even tracks, the better the quality of cricket. Right now, too many countries can score a 325, 350, 375, and the second team can go and chase it. West Indies made 374. Netherlands went and got 374 as well. This means, yes, it's about talent, but when the pitches are consistently aiding 360 plus scores, how can anyone enjoy watching this kind of bilateral cricket? Kash keh rahe, it's only focused on big players like India. Look at Netherlands. Despite qualified for the World Cup, they don't have a single match for World Cup. Again,
ICC can offer you platforms. Does the ICC truly care about spreading the game? I have doubts. I think cricket is slowly taking over by business. नहीं ये तो हो चुका है भाई निहार ये तो बहुत बहुत सालों से है 15 साल 16 साल से तो आईपीएल चल रहा है ये आईपीएल के टाइम से ये इरोजन शुरू हो गया एंड वी हैव टू एक्सेप्ट वी कैन नॉट फाइट दिस सिस्टम ठीक है सूदिंग मेडिटेशन भाई इंडिया पाक टेस्ट और ओडीआई सीरीज मस्ट न्यूट्रल वेन्यू नहीं ये सरकार हमारी सरकार ये कभी हरगिज अप्रूव ही नहीं करेगी उसके लिए सरकार को बदलना पड़ेगा होगा नहीं यूरोप एंड यूएसए में क्रिकेट फैन बेस T20 से बनाने का प्लान तो अच्छा है बिल्कुल सही है बट आई वांट नो has cricket breakthrough in these continents. No. So this is something which I've talked about. In fact, a couple shows ago, I gave the example when I was talking about. I was on a podcast with Harsha Bogle in 2010 or 11, and Harsha Bogle and I for Crick Info. And that time, the head of the American Cricket Association, hum teen the, and I gave the example. And again, if you heard this, just bear with me again because this question came from Kshitij. America is a fantastic cricket hosting nation. They have the infrastructure, the greater Houston area, the greater Dallas area. They have three, four cricket grounds, which is why American cricket is starting. But you cannot expect the sport to become a breakthrough. Cricket in America will be successful to the extent that you build good grounds because anywhere a top team comes, Rohit Sharma, Virat Kohli, post retirement, I mean, any big player goes to America, anywhere, Chicago, New Jersey, Houston, anywhere you go and anywhere there's NRIs, there's Pakistanis, Zimbabweans, Bangladeshis, South Africans, Sri Lankans, West India, whatever I'm saying, जहाँ पे expat लोग हैं वहां तो आपको मोटा मोटा हाउसफुल मिल जाएगा because T20 like baseball 3 घंटे में खत्म है 3.5 घंटे में खत्म है and T20 league is fun it's opened up a whole new avenues सो अमेरिका में और यूरोप में आप होस्टिंग कर सकते हो यूरोप का फिर भी क्या है यूरोप का प्रॉक्सिमिटी है द Dutch have been playing cricket since the 1860s because of the proximity and the British Empire, right? America is isolated. वो आसपास वेस्ट इंडीज ही है. You cannot expect cricket to become part of their culture. You cannot expect white Caucasian thoroughbred Americans from playing cricket. It'll always be reduced to first generation, second generation, third generations, Indians, Asians, Australians, expats. So that's why I think it's not going to be able to be a breakout except for associate nations whose borders are next to traditional test playing countries. तो नेदरलैंड्स वर्सेस स्कॉटलैंड को ओवल की जगह टॉन्टन में क्यों नहीं कराते किसने का ओवल ये हो चुका है दे ट्राइड दिस 2015 वर्ल्ड कप they put Australia versus Afghanistan in one of the smaller venues no one came to watch the point is and I've been to Taunton I covered Bangladesh versus West Indies there the amount of Bangladeshis living there they could probably fill up two-thirds of the stadium but are you going to get the same thing when Netherlands and Scotland play the fact is no. For Scotland to play, you'll have to do Scotland at one of the Scottish venues. So the Star, and I've heard this on record. Star people have told me, they do not. I've had talks to IC people. The main issue is they cannot or they do not want to show a stadium where it's not sold out. Yes, England, but England's not going to be hosting the World Cup every 4 years, right? England still has nice, small, quaint boutique grounds like New Zealand does. But what happens when the World Cup is in Australia in those massive grounds? What happens when the World Cup is being played in South Africa with big grounds? The host broadcaster does not want Nepal versus PNG, Oman versus Hong Kong when there are literally 500, 600, 800 people, maximum 1,000 people sitting in a stadium which hosts 15 to 18,000 people. It's as simple, and it's wrong, of course. I'm not condoning it. It's as simple as that. Yesterday, I saw India women versus Bangladesh match was awful. Pitch is more important. Pitch is very, very important. Luckily, I bought our chest jersey during WTC. Love the new Adidas design, but ये Dream 11 ने लंका लगा दी. मुझे मजा नहीं आया jersey में देख के. Why certain iconic World Cup venues like Mohali is discarded from World Cup match? Mohali ground में कुछ changes की जरूरत थी और apparently वो सही समय पर हो नहीं पाया. But I would like to think it's more regional politics that Dharamshala got it because if you look at how many people in the BCCI are from Dharamshala, you can figure out why Dharamshala got the matches and not Mohali. स्कॉटलैंड में क्रिकेट स्टेडियम है भी क्या एक है वहां पे एडिनबरा में but it's not in anything comparison to what you get in England the neighboring country hope Gill and Jaiswal play in such a way that it becomes easier to say bye bye भाई बात करेंगे इंडिया के बारे में फिलहाल बात करते हैं ODIs के बारे में
90s era's cricket was emotion. Now it's only about money. Mota mota. Yes, mota mota. Yes, dear Krishnan, last question, then I gotta go. I have one question. Why T20 matches duration is so long? Yesterday match India versus Ban ended in 3 hours. Why it's not happening in international men's? I mean, the average T20 match does last 3.5 hours, right? Because you have to bowl 40 overs. Upar se you have to take the change over time. I think 3 hours is the norm. I mean, kal ka match what? But didn't yesterday's match last the full 20 overs? If you're bowling, see, Bangladesh batted 20 and India batted 20. अगर आप 20 ओवर अगर आप 40 ओवर खेल रहे हो 40 overs to bowl 40 overs does take 3 hours. That's why the IPL matches with those stupid strategic breaks they take 4.5 hours. The average T20 if you're bowling 40 overs it's gonna take 3 hours. It's not gonna be done in less unless you're bowled out in a 10 overs. If Jay Krishnan, if you're bowling 40 overs like in yesterday's match, it's gonna take 3 hours, minimum 3 hours. That's a fact. Yes, please like the stream. Thank you, thank you, thank you, thank you, guys. I've got to run. It's been a pleasure. This has been Jamie Alter on the Coffee and Cricket live stream on Are You Here for the Cricket, brought to you by Dafa News. Like, subscribe. Love you all. Keep coming back. जब भी आपको notification मिलता है, whenever you get that notification that I'm doing a live stream, join me, hit like, and ask your questions. I hope you have a great day. I will see you tomorrow discussing tonight's test match. Love you all. Take care. Jend.